Doctor, can start the session. शुरू करो। Yes. नमस्कार। मेरा नाम गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश सिंह है और आज की मीटिंग का मैं होस्ट हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल 2024 आपके लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके घर में भरपूर लक्ष्मी जी का वास हो। बट कहा जाता है ना, हेल्थ इज द वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो वेल्थ आपके पास अपने आप आ जाता है। आज ये स्वस्थ रहने की कड़ी में आज हम जिस बीमारी के बारे में या जिस लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं, वो आज के दिन में आप देखेंगे प्राय हर तीसरे चौथे घर में यह बीमारी से पीड़ित लोग हैं, या उनके कोई मित्र पीड़ित हैं, या कोई उनके रिश्तेदार पीड़ित हैं। यानी इतनी कॉमन बीमारी है ये। और आप देखेंगे कि अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, क्या खाना पीना चाहते हैं, क्या आपको खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब बातों के बारे में बताने के लिए हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता यहाँ पर हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं। और उनको करीबन मैं 40 साल से जानता हूँ। वो इतने प्रैक्टिकल बात करते हैं और इनकी इस बीमारी में इतनी गहरी पकड़ है कि आप आम जीवन में, आपके रोज के दैनिक दिनचर्या में आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये बताएंगे आपको। और इससे फिर आप उस बीमारी के द्वारा बच सकते हैं। और बेसिकली जब भी बात डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में, तो आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अधिक समय ना वेस्ट करते हुए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के स्वागत करें डॉक्टर राम सुब्रमण्यम। ही इज डबल एमडी मेडिसिन, ही इज एमडी इन पेडियाट्रिक्स एंड एमडी इन होम्योपैथ। बहुत ही अच्छा है इनका इस विषय में पकड़ है। प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर राम ऑन द स्टेज। Thank you, Dr. Girish. Thank you, Shankar. Thank you, Arun Bhai, for giving an opportunity about this topic. So, हम time waste ना करते, we shall directly jump into the topic. मुझे एक स्टेटमेंट रतन टाटा का याद है। वो हमेशा कहते हैं, the only thing that works in 21st century is personal authentic story. तो थोड़ा सा मेरा स्टोरी बताता हूँ। जब भी मैं मेडिकल कॉलेज में था इन 70 to 79 9 years, वेट वॉज अराउंड 70 to 72 kilos। फिर बाद में शादी के टाइम, शादी ऑल्सो इन दिसंबर ऑफ 79, दैट टाइम थोड़ा खाना 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 75 हो गया। बाद में क्या हुआ कि वंस यू स्टार्ट गेटिंग पेशेंट्स, यू गेट लॉट ऑफ मनी। और पैसा आता है तो आदमी को खाता है, आदमी खाना खाता है। दैट इज अ नॉर्मल थिंग। हमारा साइकेट्रिक में बोलते हैं कि 5 ग्राफ रहता है। स्ट्रगल, स्ट्रगल 25 to 30, एवरीबडी स्ट्रगल्स। 30 to 45 पीक, भरपूर पैसा कमाते हैं, भरपूर एवरीबडी। 45 to 50 प्लेटो, आपका इनकम थोड़ा स्टैटिक हो जाता है। फिर बाद में 50 to 55 डिक्लाइन होता है। 55 to 60 में कुछ बीमारी आती है। बाद में जब भी एंडिंग होगा वो भगवान जाने कभी होगा। सो दिस इज द स्टोरी। सो पीक के टाइम में सब लोग खाते हैं। सो देर आर 2 stages when people eat. एक बोलते हैं हैप्पीनेस ग्लटनी एंड दूसरा बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ग्लटनी। जब भी आदमी डिप्रेस होता है, एंग्री होता है, डल है, तो बहुत खाता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत खुश है। हम बोलेंगे जरा कंट्रोल करो, ये करो। अरे साहब यही तो उम्र है खाने का, तो अभी नहीं खाएंगे तो कभी खाएंगे। तो उस दृष्टि से वो लोग खाने का स्टार्ट करते। देन पीपल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। एवरेज नॉर्मल अबाउट 1 to 1.5 kilos पर ईयर लोग पुट ऑन करते। तो समझो राउंड अबाउट 30 में उनका वेट 70 रहता है, तो सडनली दे बिकम अबाउट 85 90 एंड ऑल। एवरीबडी सबका रहता है। तो वो 90 के टाइम में थोड़ा सा डर लगता है। सो LIC यूजेस द सिंपल फार्मूला। अपना LIC का एज ओल्ड फार्मूला स्टिल होल्ड्स। LIC के लिए मेल्स का 70 kilos एंड फीमेल्स का 60 kilos। तो वेट गेन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, लेडीज बिकम अवेयर व्हेन दे आर समवेयर अराउंड 80 90 एंड जेंट्स बिकम अवेयर व्हेन दे आर 90 95। तभी डर लगता है। 100 हो गया तो बहुत ही डर लगता है। 120 हो गया तो फिर बात ही अलग ही बात है। तो दीज आर ऑल वेरियस स्टेजेस। सो घटने में इट इज हार्डली 1.5 किलो एक साल का, 1.25 किलो एक साल का, बट उसका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो सेम चीज घटने में इट विल नॉट टेक 1 year। घटने में यू कैन लूज अबाउट 1 to 1.5 kilos पर
month. It is not per year. So that you should remember. Okay. So very important is फिर मेरा इतना बढ़ गया, फिर बाद में हॉस्पिटल प्रैक्टिस ये वो कुछ खाने का ठिकाना नहीं. और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लॉट ऑफ टेस्टी फूड, बॉल फाफड़ा घाटिया, एंड आई यूज टू लव इट. तो वो सब खाने का, ये करने का, पाव भाजी, ये ऑल दैट बैंड स्टाफ को लेके देने का, ऐसा करते 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 round about somewhere around when I was 59, at that time I had to go for a seminar, मलेशिया. और मलेशिया में गया तो वहाँ पे आई कुड नॉट क्या बोलते हैं, go for shopping. I told my wife थक गया थक गया थक गया थक गया. So then when I came back, शुगर चेक किया तो 350. So that was the first time it was detected. कहने का मतलब क्या है कि when you have any funny symptom, please check up your sugar. Remember one thing, if you have 10 family members or 10 friends, हर एक का presenting symptom will be different. My father was a diabetic and my mother was a diabetic. तो दोनों में क्या है, जब दोनों हैं तो your chances almost genetically become 50 to 75% more of getting diabetes. If you are 4 children, 2 will definitely get. तो ऐसा all that genetic statistics है, but don't worry about it. But presentation for my father had a boil in the back of his neck. उसको medically बोलते हैं carbuncle बोलते हैं. My mother had loose motions. I had tiredness. Some people have the common symptoms which are given in textbooks. Textbooks में normally 3 symptoms है. Everybody knows about it. Polyuria, polydipsia and polyphagia. तो 3 P's है. Polyuria मतलब पेशाब बहुत ज्यादा जाना. They have to get up at night and go पेशाब के लिए जाना. तो polyuria. Polydipsia, बहुत thirst, because the cell doesn't get sugar, so it tries to get water from whatever sources. So polydipsia. And thirst के साथ में you get polyphagia, बहुत खाने का इच्छा. So suddenly you put in on lot of weight. Okay. So most important thing is कैसा diagnose करना. See, normal blood sugar is 80 to 120. Fasting 80 रहना चाहिए. Post lunch, 2 hours after lunch should be 120. कैसा measure करना चाहिए? After the last morsel जो आप खाते हैं, supposing you are having lunch at 1:30, 1:45 को आपका खाना हो गया, so you have to do the checkup at 3:45. The rule is to do it 2 hours after your last morsel of food goes inside your mouth. That is the basic rule. So test करेंगे तो you should get this reading. But supposing you get a reading of fasting between 100 to 109, you can take down, then you are called as a potential diabetic, or also called as pre-diabetic, or also called as metabolic syndrome going towards metabolic syndrome. So you can use all these 3 words, no problem, but you should know the number. So किसी का भी fasting sugar किया and it comes as 107, 108, and automatically he has put on 10 kilos, and उसका waist measurement भी 95 से ज़्यादा है, and he has got little hypertension, and little he has got cholesterol ज़्यादा. So tell him, boss, ये थोड़ा danger signal है. If you do proper lifestyle management, you can come back and reverse it. So it is easy to reverse a pre-diabetic or potential diabetic or metabolic syndrome. ये इसमें आपने थोड़ा careless रह गया, and it jumps to the other side, and fasting becomes 130, 140, post lunch becomes 200, 250, 300, then you are labeled as a पक्का diabetic. Okay, तो मेरा भी ऐसा labeling हो गया. Then I did window shopping here, there, ये diabetes, एक ने इतना गोली दिया तो नींद आता था, दूसरा ने. So what I want to say is there is no medicine without any side effect. वो बोलते हैं ना, if there is a medicine, it will have an effect. Definitely it will have a side effect. तो थकान आने का, ये आने का. So why I am telling this is youngsters who are at that borderline, of weight gain. So how to know your weight? Take down the formula. Height in centimeters minus 100. Supposing height, and normally in India nobody talks in centimeters. The young generation might talk, but ज़्यादा करके सब लोग 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 2 इंच. So 5 feet is 60 inches. Supposing somebody says my height is 5 feet 7 inches. So 67 inches. Multiply by 2.5, you will get a particular answer.
Supposing the answer is 170 centimeters. So height in centimeters minus 100 is your expected weight. Okay. That is the answer. Weight in kilos. So 170 centimeters minus 100. So कितना हो गया 70 kilos. According to WHO, plus or minus 5% is allowed. So plus 5% of 70 कितना हो गया 73.5. ये साइड में माइनस किया तो 66.5. So between 66.5 and 73.5, you are considered as okay. But instead of 73, you are 83, 93 and all. So definitely थोड़ा सा ज़्यादा है. You may not be diabetic because if supposing there is no family history of diabetes, somebody has got your parents or somebody had BP or somebody had cancer, then you may not get diabetes. This is not a rule for everybody. Everybody will not become diabetic. So it depends on genetic history. Genetic history कितना ज़्यादा है and depends on your structure also. So structure you should know. Some people are ectomorphic. Take down. Ectomorphic means less muscle, less fat. एकदम पतला दिखता है, एकदम पतला. Mostly they don't have diabetes, but they have BP and all. But they are called as ectomorphic, lean and thin. Nowadays they use thin fat Indians करके. That is a different. Don't worry about all that. Ectomorphic means patla. Mesomorphic, medium muscle, medium fat. Okay. And last is endomorphic. Endomorphic is less muscle, more fat. I'll repeat. Ectomorphic, less muscle, less fat. Mesomorphic, medium muscle, medium fat. Endomorphic, more fat, less muscle. Endomorphic are mostly थोड़ा बहुत plumpy रहता है. If they don't control, then they go very fast to 80, 90, 100, whatever all these conditions. Okay. So इसमें then I tried various. Then I came across one organization which I should mention, Freedom from Diabetes. It is Pune based and they are doing wonderful work. Dr. Pramod Tripathi. They have almost reversed about 15,000 people. And when I joined them during COVID, my weight was 94 and today I am 77. Thanks to them, thanks to yoga, thanks to medication, thanks to exercise, thanks to transformation, thanks to what you call meditation, medication, all these things. So what I'm going to show today will be a mixture of everything. I even took some notes from Dr. Jagannath Dikshit. So आपको जो मैं देता हूँ, I am giving you a क्या बोलते हैं bird's eye view. It is not some, you don't have to become a doctor or something like that. But general knowledge इतना होना चाहिए. Okay. So with that, I think we can go for the slides. Shankar or Arun by anybody. Arun by one. Yeah. Yeah. Next one. Yeah. So basically diabetes is excess sugar in the blood. First one first. Yeah. Healthy. Okay. Yeah. ऊपर वाला yellow thing is the liver with the pancreas like a tail. बीच वाला is red one is blood vessel and ये side में cell. Normal person में क्या होता है? Whenever you eat, वो खाना intestine से blood में जाता है, insulin produce होता है and insulin then pushes the glucose into the cell. This is normal. Type 1 diabetes, insulin बनता ही नहीं, doesn't happen only, doesn't produce. That is more common in children and in youngsters. Don't worry, it is only 5% of the population. 95% like you, me, everybody, they are all type 2. So you should know more about type 2. Type 2 में क्या होता है? The yellow diagram, the pancreas have become very bad and shrunken. So the insulin produced is either less in quantity or quality is poor. So insulin is not able to push the जो
ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है उसको सेल में नहीं डालते. Why they don't put is in the cell there is something called as receptor. You should know this word. You cannot say मुझे receptor word पता ही नहीं. Receptor is as common as control alt delete in computer. So a receptor is a place where the information goes and gets stuck. Example of receptor is plug and socket. Supposing अभी आपको इंजीनियरिंग कोई स्टूडेंट को बोलेंगे तो बोलेंगे सॉकेट रहेगा तो ही प्लग अंदर घुसेगा. Another example is lock and key. लॉक रहता है तो ऑटोमेटिकली वो की अंदर घुसता है. बट व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स सपोजिंग अ स्मॉल चाइल्ड इज देयर, 1 year old चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड, वो क्या करता है, वो लॉक का जो होल है ना उसमें च्युइंग गम डालता है. हैव यू सीन? बच्चा मस्ती में च्युइंग गम डाल देता है. तो कितना भी आप आपको पता ही नहीं रहेगा, अब कितना भी चाबी घुसाएंगे तो खुलने वाला नहीं. सेम थिंग हैपेंस इन दिस रिसेप्टर्स. These receptors get jammed, get locked. Why they get locked? You should know. Most important is glucose. Glucose हम खाते हैं पूरा life. So it is not a disease which happens overnight. It takes number of years. Now I'll tell you a simple example. Normal reading कितना आता है? 80 to 120. Supposing we take it as 100. Supposing my reading or Arun's reading comes as 100 milligram per deciliter. 100 milligram deciliter means 100 ml of blood. Am I right, Arun bhai? Correct? थोड़ा मुंडी हिलाना तो मुझे पता चलेगा. करेक्ट गिरीश, बरोबर है? Yes, sir. Perfect, sir. So 100 milligram in 100 ml of blood. एक जीरो वापस डालना. So 1000 milligram becomes 1000 ml of blood. 1000 ml of blood is how much? 1 liter of blood. And 1000 milligram, Arun bhai, is 1 gram, correct? So 1 gram in 1 liter of blood. Simple. Any difficulty in maths? 1 gram in 1 liter of blood. टोटल ब्लड कितना है बॉडी में? 5 लीटर. तो 5 लीटर में कितना रहना चाहिए? 5 ग्राम. 5 ग्राम ग्लूकोज शुड बी देयर. 5 ग्राम इज 1 टीस्पून. एक चम्मच शक्कर रहना चाहिए. पूरा दिन हम खाते हैं इडली, डोसा, उपमा, शीरा, फिर सब्जी, ये वो, वेफर, बंगाली, पंजाबी, ये वो. तो सोचिए कितना चम्मच है. तो कितना काम करना पड़ता है? इंसुलिन को बहुत काम करना पड़ता है. तो नॉर्मल, नेक्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अप टू हियर? सिंपल. अरुण भाई? Yes, sir. ओके. इफ अरुण भाई और गिरीश सेज यस, देन आई विल गो Yes, लिटिल yes, अहेड. yes, समझ में आया? Yes, sir. Yeah. So now normal insulin कितना? Normal insulin take down, you should always do a fasting insulin. Fasting insulin should be 4 to 20 units. It is international units, but take it as 4 to 20. Supposing my insulin average is कितना हो गया? 10 units. For everything, any time I eat, I secrete 10 units. Arun bhai का fixed must be 12 units. Whatever is fixed. Supposing I eat 3 times, तो कितना होना चाहिए? 10, 10, 10. 30 units per day. And range कितना है? 20 दिया है. 20 के बदले में 30, no problem. Body will tolerate. 1 साल, 2 साल, 3 साल. बाद में अब बहुत खाने लगा, बहुत पैसा कमाया, बहुत बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो इंसुलिन बढ़ जाता है. तो नॉर्मल आपका फास्टिंग जो लेवल 20 है उसके बदले में इट कम्स एज 40. एंड डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित बोलते हैं यू ईट ओनली 2 times, 40 and 40, 80. नॉर्मल कितना होना चाहिए? 20. और 2 बार खाया तो 80. बट पब्लिक 3 बार खाता है तो 120. वो बोलते हैं 3 तो कुछ नहीं है. पब्लिक 5 बार खाता है. देयर इज वन मिड मील 11 बजे एंड बाद में 5 बजे कुछ स्नैक्स खाते हैं. वो तो छोड़ो, वो बोलते हैं बीच बीच में किचन में जाके कुछ ना. एवरी टाइम यू पुट एनीथिंग इन द माउथ, विच इन आवर मेडिकल लैंग्वेज वी कॉल इट एज एल्बो माउथ डिजीज. एल्बो हिला तो सीधा मुंह में, एल्बो हिला तो सीधा मुंह में. Every time insulin is secreted. So a stage will come to per your day you start secreting 100 units. Am I right, Arun bhai? Yes, right, sir. 150, 100, 200 and all. तो कोई लोग जिनका वजन एकदम 120, 90 सब रहता है, you do their fasting level, you will come to know exactly how much he has eaten over a period of year. You ask everybody, they'll say हम लोग 3 बार ही खाना खाते हैं. But not only the quantity, quality is also important. So quantity and quality both are important. तो एक दिन के बाद क्या होता है? The receptors get tired, they get blocked, they get bored. वो फंस जाता है.
and that is called as insulin resistance. Did you understand? So the most important cause today is insulin resistance. Can we go to the next slide? Any problems up till now? No. Okay. So now disease. Now once you understand insulin resistance, rest all very simple. So disease means not at ease, communicable and non-communicable. Okay. First line we have got congenital and acquired. Congenital means from birth, acquired means after birth. After birth में तीन बीमारी है, एलर्जी, communicable, non-communicable. आजकल one more column, autoimmune. Don't worry about that. Allergy, our sir used to say, Allah ki marji. If God says you are allergic to chana dal, you have to avoid chana dal. Communicable disease means it goes छुआछूत. एक बच्चे से second बच्चे को, whole class gets chicken pox, whole class gets a viral fever, etc. But non-communicable is mostly in adults. Okay. Nowadays, non-communicable, communicable also is in adults. Corona is one of the most live examples. Non-communicable in Ayurveda, they used to call it as Maharaja Rog. There are 6: diabetes, heart attack, BP, cholesterol, cancer, aging, etc. Okay. Usme se diabetes is the boss. What are the causes? Number 1 is genetic or hereditary. Genetic means it runs in families. Daddy, mummy, grandfather, that. Hereditary means it can skip one generation. That is called as hereditary. For example, color blindness. Color blindness, some families, एक दादा को skip करके next generation को आते. That is hereditary. So that is. Second is the most important cause, that is obesity. Obesity is the precursor or the mool root for all these Maharaja Rog. Diabetes, heart attack का सबका जो मूल main seed is obesity. एक बार obesity control हुआ तो all these 6 and 7 can be controlled. That is why we tell people, please lose weight, etc., etc. And third is lifestyle diseases. So for lifestyle, remember the acronym, because in medicine we have to learn a lot. So we have a lot of acronyms. What is acronym? Acronym is a shortcut to a long sentence. It's called as acronym. So what are the lifestyle? Remember 4 things. SRPW. S is stress. R is radiation. P is pollution. And 4th is wrong habits. Stress can be physical, mental, or emotional. Supposing a person is staying in Dombivli or Nalla Sopara and he has to go to all the way to Churchgate for 25-30 years. So 5-10 years of his life is completely gone because of the stress of not getting a chance to sit in the train for 25 years. Am I right? That is physical stress. Mental stress. Okay, some financial problem, daughter for marriage, job getting lost. All these produce a lot of mental stress. Okay? And stress produces a lot of negative hormones. And the bad hormones are cortisol and adrenaline. And they raise the sugar. That is why you land up. Today morning also we had a health plan. Incidentally, Shankar, last week I told Shankar we had finished 100 health plans. And today was the 105th. This lady was from Haryana. And Shankar, that lady had problem only for 6 months. She is a school teacher, 63, retired 3 years back. And her son, who has got a 10-year-old child, and the wife asked for divorce, and 6 months are over. She has started sleeping at 2:30 a.m. in the morning, not getting sleep, then leg pain, this, that, etc. Went to the doctor, fasting insulin 180, post-lunch 340. She is directly put on insulin. So mental stress was too much. Emotional stress, especially the death of somebody near and dear. For example, now in Ukraine, Israel, imagine, when you see the TV, so sad it is. Emotional, the breadwinner is gone, the child is in the mother's arms, so many things. So all this produces stress. Stress produces negative hormone produces raise in sugar. So all these are interconnected. Next is radiation, don't worry much. Pollution, any child can talk about pollution, air pollution, water pollution, this pollution, etc. Wrong habits is very important. Smoking, drinking, junk food, lack of exercise, over-exercise. Some people exercise for 1.5 to 2 hours and they drop dead completely. Lack of adequate sleep, drinking less water, and negative attitude, sitting in near the computer whole day, bending.
So all these produce what is called as free radicals. So when somebody asks you what is free radicals are bad chemicals due to excess of SRPW. Simplest definition. Because it cannot be measured. You cannot put like a thermometer or you cannot take like a BP instrument. I may have 100 units of stress and Arun Patak may have only 50 units of stress. Girish may have 5,000 units of stress. So stress varies from person to person. And the person who discovers something to measure stress, he will get super Nobel Prize, not normal Nobel Prize. But that is not possible only. So that is why it is a major killer. Okay. So all these produce free radicals and they go and affect your organ gradually, depending on your family history. If your father, mother were affected at a young age, you can be affected. If they are affected at an old age of 80, but you are not able to cope up with stress, they may be affected at 70 with diabetes, but you can be affected at 35 or 40. So there is no rule कि मेरे father को 75 में हुआ तो मुझे भी 75 में. There is no hard and fast rule. Okay, everything depends on how much you are able to cope up with stress. Okay, and next is treatment. Any treatment, remember, it is a triangle. We have been taught in medical school. A is the main treatment. Allopathy, homeopathy, sympathy, empathy, finally Tirupati. Okay, so all it can be any of this. Then B is prevention. So prevention we are taught in our Amway, EARN. So EAR is prevention, exercise, attitude, and rest. And N is nutrition. So that is why in Bhagavad Gita they say, when food is wrong, medicine is of no use. And when food is right, medicine is of no need. That is what Lord Bhagavan says. And what is the meaning of that? Is if you know what to eat right, then there will be no problem. But the problem is 90% or 95% of people do not know what to eat. And that is what we are teaching. Okay. Next slide. Yeah. So we have understood insulin resistance, that receptors get blocked. So there are 7 causes for insulin resistance. 4 are diet related, 2 are exercise related, and 1 is stress related. But that one number is the boss, stress. Next one. Yeah. So this is a cell. So all the 7 reasons are given. Diet related, number 1 is insulin-like growth factor. What happens is whole life we have been taking milk. So milk has got one thing called as IGF, insulin-like growth factor. This is required for growth. This is for 3 stages. First is for children. Definitely growth is required. Second is for those who are doing exercise. Like for example, Dhoni comes, my 1 liter दूध रात को पीता हूँ. That is because he is doing that much exercise. And some are, that Akhada and all in Haryana, they go for wrestling at all India level. They drink milk 3-4 liters. So for them that IGF will work. But for a person like you or me, who are not habituated to that much of exercise, the receptor will not know whether this is IGF or whether this is insulin. So whenever there is confusion, there is inaction. That is what Kumar has taught us. So once there is inaction, the receptor gets blocked. Did you understand? So more glucose, more insulin production, more confusion to the receptor, more blockage, more sugar. Next is acid and inflammation. Acidity increases. In our medical college, we have been told acid. God has made stomach for acid production for neutralizing the food. But what happens is sometimes people eat a lot. So that is why for reducing acidity, we have been told 3 things. Hurry, worry, and curry. Take down. People who are very, very anxious and too much hurry, they have a lot of acidity. Worry, anxiety, worry, too much worry. And third is curry, too much of spicy food. Hurry, worry, and curry is an important cause for acidity. Inflammation. Inflammation is of 3 types. Acute, subacute, and chronic. Acute means 6 दिन के अंदर हुआ, 6 days. For example, yesterday I got hurt in my finger. So it has become red. So that is acute inflammation, 6 days. 6 days to 6 weeks is subacute. 6 weeks to 6 months is chronic. So in what happens in diabetes, there is subacute and chronic inflammation, not only in diabetes, but all non-communicable diseases.
So because of this inflammation, the receptors get blocked. That is why the sugar doesn't come inside the cell and sugar raises in the blood. Third is excess fat. I gave you the example of chewing gum. Same, because insulin, when it cannot push the glucose, it produces a lot of fat, because insulin is a hormone, and hormone has multiple roles. What is the difference between hormone and other secretions? There are three: exocrine gland and endocrine gland. Endo means inside, crine means secretion. Inside secretion, three major. One is insulin, second is female and male sex hormones, testosterone, estrogen, etc. And third is thyroid. These are the three main bosses. Others are there, you don't have to worry. Don't worry. Okay. Exocrine, which are the examples from outside. One is your tears. When you are emotionally choked up, automatically tears come from your eyes. When you see some good food, your saliva starts sweating. When you see some nervous cereal or something, you start sweating. Okay. So sweat, tears, and saliva are exocrine glands. Exocrine glands act locally, whereas endocrine glands act everywhere in the blood, because they are directly put in the blood. And from blood, what happens is fat is deposited. Same thing, fat goes and goes on the receptors, and you get that chewing gum effect. It is called as chewing gum effect. It is coined by a person called as Neil Bernard. He is an authority on reversal of diabetes all over the world. Okay. And number 4 is lack of micronutrients, especially chromium and zinc. That is why nowadays they say that a lot of chromium and zinc. 2, exercise related, stagnated limb. Stagnated limb, that's why they say keep on moving, move your hands after 20 minutes, go for walking, because the lymph, there is no valve. Lymph has to work against negative pressure, like engineering. So what happens is it has to get some movement. So lymph is one. And lack of muscle strength. This is the most important, number 6 and number 7. If you don't have muscle strength, your muscle will not have takat to push the glucose inside the cell. That is why nowadays they say whatever walking you do, उसके साथ में थोड़ा सा weight छुटाओ. Even in our morning NutriLive 360, they tell us to lift some weight. Weight is very important, because muscle grows very gradually. Next term. So this is the same cycle. High carbohydrate that lady is eating. Again, sugar becomes more. Pancreas has to keep on. It is like, क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बीमार घोड़े को चाबुक मारना. In English we say flogging a flogged horse. Already the horse is flogged by the owner, and still you keep on putting. So insulin मार के receptors थक जाता है. The sugar doesn't go, and then you feel thirsty, and again you eat more, again hungry, again thirsty. Same cycle. Next, Arun bhai. Yeah. So summary: fat, chronic, excess insulin, inflammation, poor muscle, poor inactivity, stress, lack of sleep, microbiota, new word for last 5 years. Gut microbiome, the bad bacteria are becoming more, good bacteria are becoming less. That is why you get sugar imbalance. Sleep, puberty, what happens? They eat a lot, then PCOD, etc. becomes common. Pregnancy is a separate chapter. It is called as gestational diabetes. Some ladies out of 100, 1 or 2 might get during pregnancy. Certain medical conditions can be associated with diabetes. Then menopause also, you get sudden rise in sugar, old age, and poor diet. So all this produce contributory factors for insulin resistance. So if somebody asks what is the cause, main is वो receptors जगड़ गया means जाम हो गया. Next. Yeah. So because it is a hormone, see the arrows. It is acting on muscle, it is acting on fat, it is taking some new receptors from the intestine, then it is getting stored in the liver. Then there is the biggest nerve in the body is vagus nerve, from the head to the toe, from almost up to spinal cord. So insulin का वो signal भी उधर से आता है, and then sugar rises. Next one. Yeah. So why we are telling to prevent diabetes? Because complications are very dangerous. So one is microvascular, means small blood vessels. One is eye, kidney, and peripheral nerves. These patients get a lot of tingling numbness.
Today morning, that lady had tremendous tingling numbness. No sleep up to 2:30, 3 o'clock in the morning. That is because of the poor blood supply and poor nerve supply also. Macrovascular or big blood. Macro means big. So brain, heart, and sometimes your extremities, sometimes it can even lead to gangrene. So these are the major complications you have to prevent. Okay. So these are the supplements I'll just explain. For example, my brother he is now 82. At the age of 70, he had cataract. And he was not a believer of Amway and all. So I told him, Arey yaar, we have been taught so much in the training. Please take bilberry with lutein. You will be surprised today, 12 years, and his cataract is almost, the doctor says there is no need of surgery, and he is only on bilberry with lutein. The moment it is over, immediately he orders. Okay. So number one for eye is bilberry with lutein. For kidney, there is no particular antioxidant, but nowadays doctors give one tablet, Nefrosave, Nefrosave. And best antioxidant for kidneys is lot of water. Water should be minimum 3 to 4 liters. Divide it as breakfast 1 liter, lunch 1 liter, evening snacks 1 liter, dinner 1 liter. This is an absolute must. Just as they say, walking is required to save the heart, water is required to save the kidney. Water is important for kidney. Neuropathy, again, you can give our natural B, you can give calcium, and you can give vitamin D. Brain, you can give Brahmi to prevent any complication. Brahmi, you can give Ashwagandha, and you can give Omega. Heart, there are 4. Take down. CoQ10, Omega, CH balance, and garlic. Extremities, same. Natural B, calcium, and vitamin D. And you can add protein to all the things, no problem. Next. Yeah. One slide, aage wala. Yeah. This is the most important slide. See, the moment you take carb, see on the x-axis, you will get number of hours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The moment you eat carbohydrate, immediately the sugar rises. You can see it is almost like a jump and then it comes down. Protein kite, you can see it is almost at about 3 hours or 3.5 hours. And then it goes down. Fat, when you go for a marriage and eat in a buffet, uska to ekdam 6 घंटा 7 घंटा तक रहता है. So moral of the story is, if you have carbs, it will go shoot up like anything. Okay. So now when the patient asks, kya nahi khane ka? So what happens is, why patients get angry is, suddenly the doctor only says, ye goli leo aur thoda subah आधा घंटा चलो और थोड़ा सा शक्कर कम करो. Now shakkar is such a big word, they get confused. So you have to tell what is shakkar. Take down. Number 1, all sugars. So they will ask, shakkar matlab kya? All sugars. To give them example, all things which you see in a Bengali sweet shop. In Bengali sweet shop, how many sugars are there? At least 15 to 20 sweets are there. So they will come to know कि ये सब है, राजभोग है, रसमलाई है, ये है, वो है, वो है, वो है. Next is, tell them all bakery items. Because bakery में क्या क्या है? You tell them, you tell me. So they will tell. उधर खारी मिलता है, उधर ब्रेड मिलता है, टोस्ट मिलता है, फिर ये मिलता है, बिस्किट मिलता है, अलग अलग बिस्किट मिलता है, केक मिलता है, आइसक्रीम मिलता है, all that. So all that is bakery items. Okay. Then potato and rice. So these are all carbs which will immediately raise the sugar. What will not raise the sugar? You should tell them that also. The most important is vegetables, fruits, fibers, cereals, legumes, and pulses and sprouts. Okay. So tell them to have more of these things and tell them to have more of proteins. That is why proteins, because if you know this diagram, and that is what in the morning program Dr. Shyam tells, that your duty is to become a carb detective. I always tell my whom I do these health plans, and I tell them, you go to any Udupi hotel and they will give you a takeaway menu card, idli sambar, vada sambar. So you see which is protein based. So once you know what is protein based, whole life you have eaten idli, dosa, that is enough now. Now if you are in the pre-diabetic or diabetic or whatever it is, now you start getting converted to proteins. So previous slide, Arun bhai.
Thank you very much. So this slide is very important. See, there is a line in between, that is a passing mark. Normal passing mark अपना स्कूल में कितना रहता है 35%. Normal medical engineering सब lawyer BR में 50%. Protein में passing mark is 70. So WHO gives mark. Any mark above 70 is called as A class proteins. A class का 3 function right hand column में लिखा है. Growth and repair, immunity and hemoglobin formation. How to remember A class proteins? Take down easy formula. Okay. DENS. Very easy formula. D is all dairy products. Dairy में इंडिया में 5 है. Milk, cheese, curds, paneer and buttermilk. So these are dairy. Okay. A class protein. E is egg. N is non-veg, chicken, fish and mutton. And S is soya. So all those things are covered, you can see in the upper quadrant. And their marking is also very good. If somebody is not a diabetic, if you are just 35 years, you are healthy, you are fit, you can eat all dairy items, no problem at all. But if you are borderline, this lecture is for those who are in borderline or who want to take control right away, want to reduce 5 to 10 kilos, then this lecture is meant for them. Okay. Now, when we come to B class function, B class has all minor functions. When we were beginning of Amway, we had a small booklet, 50 minor functions. Remember, Girish? Yes, sir. Remember? Yeah, we had a small booklet. I don't know whether it is available nowadays, but beautiful. So there are 50. So how to remember what are the B class proteins? So remember the formula DNS. All dals. In India, 5 popular dals: moong, masur, tuar, urud and chana. Okay. And N is all nuts. Any word ending with nut. Cashew nut, walnut, choconut, peanut, coconut, groundnut, all that nut, badam, pista, all these nuts. And sprouts, moong, matki, usal, rajma, chana, all that family, they are all B class, but they have got very good protein, but not almost like soya and all, but they are quite okay. Okay. So you should have more of A class, but in our, when I take this history for health plans, you will see they will always say, breakfast में क्या खाते हो? So they will say 5 popular: idli, shira, dokla, upma, poha, and non-veg people, omelette and paratha. No, North India paratha. Because we take history from Kashmir to Kanyakumari. So all these are very common. So you will find most of them are carb based, except for example, dokla is protein based, and paratha also, if you have wheat, it becomes again carb based. But if you have other vegetables mixed, it definitely becomes little protein based, and egg is totally protein based. So you can tell them what to take. Now, what to take, they should also know what to take. Take down for breakfast. All Indian items with predominantly dal: dhokla, khandvi. You can have five pieces. 5 pieces. Khandvi you can have 8. Chila is common in Punjabi, the northern India, 2 per day. Thali common in Maharashtra, 1 per day because it contains mixed dal. In Andhra we have pesaret. Pesaret is also like adai in South India, mixed dals. Then sprouts, they can have matki or usal. Then North India you can tell them ragada or chole. Maharashtrians you can tell kothmir vadi. Then you can also tell dal vada. Dal vada is also totally chana dal. Okay. And then egg if they want. If they want to avoid cholesterol, you can take egg white. Egg white you can take 3 or 4 per day. Even if you want 3 egg whites, you can add 1 egg yellow. That is also allowed. Okay. So this is a very good breakfast combination, predominantly protein. Okay. Then when we go to roti, sabji, dal and chawal. So I always call them RSDC. This is our favorite dialogue in our whole country. Roti, sabji, dal, chawal. So tell them that roti, you make it millets, make it jawar or bhakri. Sabji, bhakri, roti, sabji, dal and this. So sabji, you add salad and then put some sabji and dal. That is enough. And avoid rice. So that way lunch and dinner.
So then they will ask, Sham ko kya khane ka? Take down, because maximum hunger is 5 to 7 p.m. That is all over the world. The peak hunger hormone is at 5 to 7. So you can have dry fruits, walnut, badam, pista, and dates are very good. About 4 to 5 per item. Dal khakra you get. Dal khakra is chora feri. Chana and peanuts are excellent. Okay. One of the best, cheap and best in our country. Okay. Fruits, if you are telling them, don't tell them not to take in the evening because it raises the sugar. So always take it in the morning. According to Dr. Jagannath Dixit, he mentions 3: coconut water, cucumber, and tomato. They don't raise the sugar. So he has done experiment with almost 120 items. So every person has got his own kya bolta hai, variety, etc., etc. So we have to give respect to all those things. So this is how you prepare the diet for people. Okay. Next. Yeah, next. Yeah, this is very important. Glycemic index and glycemic load. Extremely simple. See, the first column and second column is glycemic index. Glycemic index means how fast it is converted to sugar. And glycemic load is how much quantity of sugar is there in that particular item. I will read one. Peanuts glycemic index is 14. Glycemic load is only 2. So take down anything less than 50, 50. Glycemic index is excellent, very good. 50 to 70, moderate, not that good. More than 70, very bad. See the last item, glucose. Kitna hai glycemic index? 100. Okay. Similarly, for glycemic load, take down 0 to 10, 1 to 10 or 0 to 10 is excellent. And 10 to 20, 10 to 15 is moderate, and 20 and above is very bad, avoid. Any item, for example, supposing I tell Arun bhai, just Google में डालना watermelon डालना, watermelon. खाली Google में GI and GL of watermelon. I'll show you a demo. GI and GL of watermelon. GI 72 and 5. कितना? GI 72 हाँ. and GL 5. of Very 5. good. So here what we have got, GI is 72 and GL is 8. So anything less than 10, public क्या बोलता है कलिंगड़ नहीं खाने का because उसमें sweet ज़्यादा है, ये ज़्यादा है. So remember one thing, out of GI and GL, always see GL, because GL tells you the quantity. Quantity is more important than quality. So if the GL is less than 10, it is allowed. So even though Kalinger has got a higher GI and it has got a GL is 8, it is allowed, but tell the person that you have it moderation. Use the word moderation. Limit में खाना. ऐसा नहीं कि खाना बोला तो फटाफट आधा कलिंगड़ खत्म नहीं करने. Again the sugar will spike. So this common, so any particular item, just put GI and GL in 1 second you will get it. So this is chart is meant for that, and it's very simple. Say for example, bean sprouts. Sprouts layer 25, very good, and GL is 1. So find out things which are less than 10 and use that for your diet. Very simple. Okay. Yeah. Macaroni and cheese 64 and 30. So high. So dangerous, because fat will also increase as well as protein will also increase. And as I told you, all these dairy products have got that IGL, insulin-like growth factor, and they will again block the receptors. Next. Yeah. See, why everybody is talking about dairy? You go to any doctor, they will say, that's the, and because, people are not able to stop. Because 50 साल से चाय पिया है, 50 साल से कॉफी पिया है, हम साउथ इंडियन है, फिल्टर कॉफी के बिना बाथरूम नहीं जा सकते हैं. All those things. But I am telling you, I started this 3 years back, and it is totally a mindset game. There is nothing else. Totally mind में एक बार you decide that you are going to have green tea and you are going to stop milk, 15 दिन में सब बंद हो जाए. See the amount of dangers now. It has got fat, cholesterol, IGF. I told you, IGF is insulin-like growth factor, and it confuses the receptor. Then animals are killed.
वो बच्चे को भी उसको इंजेक्शन दे के उसको इस्ट्रोजन, एंटीबायोटिक, हार्मोन, पस को खींचते हैं, बैक्टीरिया, lot of problems. That is why all doctors nowadays they say at least 10 days you stop. So that is called as gut reset. So in management of diabetes, first thing is we do gut reset. We tell them to stop meat and we tell them to stop dairy products. Why to stop dairy products? Because again that IGF is the main culprit which raises the sugar. So uske baad mein, if you have got a habit, you try to control. If you can't control, then have little of milk. The best substitutes for milk is soya milk or almond milk. Normal Amul Tetra Pak is 70 rupees. Soya is 140 and Amul is 240. I use soya. 140 is quite okay. I am comfortable last 3 years. I am perfectly fine. So it all depends from person to person. Some people can switch over in 2 months, 6 months. It all depends on your mindset. Next. Yeah. So management in short. Yeah, management in short is first is our gut reset. Tell them to stop dairy and this thing and give them that items which preferably dal. You can show them 1 or 2 diagrams. And second is breakfast instead of wheat. Tell them to use millets. You tell them Modi's name. Modi is promoting millets and definitely Jawar and Bakri in Maharashtra. They use it for a long time and it doesn't raise the sugar because I'll show you the diagram and show that diagram of that protein. And that's why it is what you call predominantly carbohydrate, but the carbohydrate is a very complex carbohydrate. So that is why it gradually rises. So वो आप उनको समझाएंगे, so they will feel this thing. And again for dinner, and tell them they can have even makhana. Lotus seeds is very good. So give them an option of about 7-8 things and tell them first important is take a good proper history. So which company had given, I'll show you. So this company has given this, ask a history of breakfast, lunch, dinner, family history, any junk food, any habits, exercise, sleep, stool craving, kitna din se diabetes hai, etc., etc. Then you calculate the protein through protein calculator, or approximately also you can calculate. Most of the people, 1 gram per kilo, 70 kilo hai, so they will hardly reach 50 grams or 60 grams. So there is definitely a deficit. So you can tell them different products are available. Soya guys, there are many in the market. Soya chunks, soya granules, tofu, tempeh, etc. But our soya is the best. So then show them. Arun, one kar sakta hai slide. Yeah. So show them this protein powder and tell them the best part is आपका time बच जाएगा. Use the word time. It is mixable with anything. Now this is my plate. Just now I had my dinner. Have a four compartment wala plate. So one should contain salads, one should contain sprout, one should contain dal or sambar, and one should contain millets. So this is what you have to show them. And tell them and show them that unless you show and tell, they will not. And tell them that these 3 things you have to have before your meal. So I show them the 1 tumbler and tell them that put water and put 1 scoop of this fiber and take this madhunashini and take this amalaki vibitaki. It is good for cleansing your gut and then for maintenance also it is very good. All these 3 have to be taken before meals because खाना जाएगा तो ही वो काम करेगा. And बाद में tell them that keep your protein powder near your dinner table or lunch table or breakfast table and have 1 scoop per day 3 times a day. I have been having 1 scoop a day 3 times a day for the last so many years now. Excellent results. I am telling you there is nothing like our protein powder. Okay. So ये आप करिए and then you can show them the box which you keep for supplement. Don't tell them all the supplements so एकदम डर जाएगा भाग जाएगा. Huh? So diplomatically you have to answer all their questions. So I think with that I am through. If you can highlight 2 people, one I think Ashok Jain can, out of these 100, about 80 to 90% are by Ashok Jain and by Bappa team. And Ashok calls people very well. Ashok, if you can just tell them कि आप कैसा कॉल करते हैं number 1 and number 2 हेल्थ प्लान से आपको क्या फायदा हुआ in short 2-3 minutes or 5 minutes. Over to Ashok. Yeah. Good evening, sir. Thank you so much, sir, for giving this opportunity.
तो जैसे सर ने बताया, सर की हेल्प, आई एम अशोक जैन फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से कनेक्टेड हूँ, मैं एक थोड़ा बिजनेसमैन। वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा। हाँ, चलो भाई। ओके, सो मैं मुंबई से कनेक्टेड हूँ, और सर की हेल्प लेके हम लोग करीब 6 से 7 महीनों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका नाम है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। और हमारा इंटेंशन यही है कि हर एक फैमिली, बिकॉज इस प्रोग्राम की कुछ स्पेशलिटी ये रहती है कि ये प्रोग्राम हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जिससे पैन इंडिया लेवल पे हर आदमी इसका बेनिफिट ले सके। और हेल्थ अवेयरनेस में हम लोग ने देखा, आज आपका सर ने वीडियो वैसे चालू बताया। करेंगे प्लीज। सर वीडियो ऑन है। नहीं, आपका नहीं, राकेश को ऐड कर रहा हूँ, इज हाँ, सॉरी। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, तो इस प्लान का हमारा मकसद ये है कि हर एक फैमिली में एक मेंबर भी अगर हेल्थ के बारे में राइट अवेयरनेस रहे ना, तो वो पूरी फैमिली के लिए अच्छी हेल्प कर सकता है, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों से, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्रोग्राम करीब हम लोग 6 से 7 महीनों से कर रहे हैं, और सर, डॉक्टर राम सर का पूरा सपोर्ट लेके हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिसमें मोर देन 100 पीपल अभी तक का इसका फायदा ले सके, 100 फैमिली इन शॉर्ट। तो ये प्रोग्राम में मैं नॉर्मल कॉलिंग यही करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ तो इस प्रोग्राम के बारे में यही बताता हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, इसकी 5 स्पेशलिटी है। सबसे पहले ये प्रोग्राम रहता है जूम प्लेटफॉर्म पे, तो आज हर आदमी जूम के ऊपर काम किया हुआ रहता है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और अगर कोई सीनियर पर्सन है जिनको जूम पे नहीं भी जम रहा है ना, तो हम लोग उनको व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड चीज, ये प्रोग्राम पूरा पर्सनलाइज रहता है, जिसमें क्या रहता है कि ये कॉल में कोई कोई सेमिनार जैसा नहीं था, ग्रुप सेमिनार। इस कॉल में पर्सनलाइज होने से क्या होता है कि इसमें डॉक्टर राम सर रहते हैं, सामने जो बंदा हेल्थ के बारे में जानना चाहता है वो रहता है, और मैं रहता हूँ। तो उनको पूरा पूरा सर का टाइम मिलता है, तो सर उससे पूरा इंटरेक्ट करते हैं। उसका सुबह से लेके शाम तक का पूरा शेड्यूल, मतलब वो उसका खान पान कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, वाटर इंटेक कैसा है, सर उसका पूरा बात सुन के उसको फिर राइट सोल्यूशन देते हैं। और उनको इतने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं ना, कि क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई बड़े डॉक्टर के पास भी वो जाता है ना, तो इतना टाइम कोई दे नहीं पाता है। तो सर उनको पूरा पूरा टाइम देते हैं, और उसके हिसाब से उनको सोल्यूशन भी देते हैं। तो ये पूरा पर्सनलाइज प्रोग्राम रहता है। थर्ड चीज ये रहती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बहुत बार लोगों को हिचक रहती है कि मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा क्या, तो राइट नाउ हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लेते हैं। और इस प्रोग्राम के तरह द्वारा लोगों को एक वैल्यूज मिलते हैं, मतलब हेल्थ के बारे में। आज हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन वो ये नहीं जानना, ये उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में पानी इंटेक लेना चाहिए। जैसे भी सर ने शुगर के बारे में भी बताया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह के बारे में। तो ये छोटी छोटी चीज जब सर उनसे बात करते हैं ना, तो वो बहुत प्रभावित होते हैं, और उनको बेनिफिट भी होता है जो वो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में इसके इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ साथ में डेफिनेटली हमारा भी नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, हमारा बिजनेस भी इसके साथ साथ में ग्रो हो रहा है, क्योंकि कहाँ कहीं कहीं चीज़ों में हमारे सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे सर सजेस्ट करते हैं उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और आप इतना सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Thank you. So now we have Rakesh Chokshi. Rakesh Chokshi is another person from Freedom from Diabetes. He will tell his story. Over to Rakesh. Hello, sir. Can you hear me? Yeah. I'm Rakesh Chokshi from Andheri, Mumbai. अगस्त महीने में शंकर सर का मुझे कॉल आया था। तो उस वक्त मैंने उनको बताया था कि मुझे डायबिटीज है, मुझे उसको रिवर्स करना है। सो ही पुट मी टू डॉक्टर राम, एंड डॉक्टर राम सर पुट मी द राइट पर्सन। एंड अगस्त महीने में आई हैड 8.7 का H1B सी था, एंड आई हैड मेरा डायबिटीज होता था 250 से 300 के बीच में। विदिन विदिन 100 डेज उस वक्त मेरा BMI होता था 35.1, एंड माय वेट वाज 93.1 kg। आज माय डायबिटीज इज 6.6, एंड सिंस सितंबर आई हैवंट टेकन सिंगल मेडिसिन फॉर डायबिटीज, टोटली स्टॉप डायबिटीज मेडिकेशन। एंड जो डॉक्टर राम सर अभी जो आपको कंप्लीटली जो मैकेनिक समझा रहे थे, जिसमें कि ग्लूकोज को किस तरह से सेल में ट्रैप किया जाता है, और इंसुलिन कैसे आपको रेजिस्ट करता है, एंड हाउ इंसुलिन इज वर्किंग। तो हम इसमें 2 पॉइंट मिस करते हैं जनरली, कि हम जो है कभी भी ग्लूकोज मेजर करते हैं, पर कभी भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपका मोर देन 10 है, एंड इफ योर इवन अ प्री डायबिटिक, देन ऑल्सो इट इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग थिंग, जिसमें आपको इसको ट्रीट द डायबिटीज एज अ कैंसर ओनली प्रैक्टिकली, और उसको इमीडिएट एक्शन करना बहुत जरूरी है।
एंड इन माय केस मैं कह सकता हूँ कि जैसे डॉक्टर राम सर बता रहे थे कि आपका बॉडी अभी तक जो है एसिडिक है, उसको सबसे पहले अल्कलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि स्मूदीज आती हैं, प्लस जो उन्होंने अभी 25% फॉर्मूला बताया आपको स्नैक्स के लिए, मतलब जो नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, जिसमें कि 25% सैलड्स है, 25% स्प्राउट्स है एंड 50% दाल बेस्ड कोई भी आइटम है। तो ये तीनों आइटम्स जो है आपके बॉडी को अल्कलाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसके अंदर। देन जो आपका डिनर और आपका लंच जो है वो 25% फॉर्मूला पे काम करना है, कि जिसमें 25% सैलड्स है, 25% दाल है, 25% सब्जी है और 25% आपका ग्रेन है। एंड यू हैव टू ईट ओनली सिंगल ग्रेन, आइदर रोटी और चावल। रोटी अगर खाना है तो यू प्रेफर नॉट टू हैव अ नॉर्मल रोटी, आप उसमें खपली व्हीट लीजिए जिसमें कि आपका ग्लूटेन फ्री होगा। तो दिस विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर ग्लूकोज ग्लूकोज को, मतलब उसको डाइजेस्ट होने को समय लगाएगा। वैसे ही आप चावल को जो है नॉर्मल चावल नहीं लेते हुए, आप अगर उसको ब्राउन राइस या ब्लैक राइस या आप जो है दूसरे राइस अगर लेंगे, दिस टू राइस, मतलब जो आपका रिफाइंड नहीं हुआ हुआ राइस अगर खाएंगे, तो इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर डायबिटीज शुगर लेवल्स इसके अंदर। देन सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है इसके अंदर कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। हमें एक मिथ है कि हम 45 मिनट से 1 घंटा वॉकिंग करते हैं जिससे कि हमारा डायबिटीज ठीक रहता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 1 या 1.5 घंटा अगर हम वॉकिंग करेंगे तो उससे आपकी कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाती है, और बट उसके अंदर कैलोरी बढ़ने से आपका शुगर इंटेक बढ़ जाता है, भूख लगती ज्यादा है, हम ज्यादा खाते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी आपको वॉकिंग जो है केवल 20 मिनट्स करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। और उसमें भी आपको 20 मिनट्स में 2 मिनट्स आप वॉक कीजिए, 1 मिनट जो है जॉग कीजिए उसके अंदर। दैट 20 मिनट विल टेक यू टू एंटी एनोमलिक पोजिशन में ले जाएगा, जिसमें कि ग्लूकोज कंजम्पशन है जो आपके मसल में से यूज करना शुरू करेगा, विच विल रिड्यूस योर ग्लूकोज लेवल। आपको और एक छोटा सा टिप दे सकता हूँ इसके अंदर, कि अगर आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं या एनओडी करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड डंप जिसको बोला जाता है, एंटी ग्रेविटी में केवल आपको 150 स्टेप चढ़ने हैं, बट एक ही 10 स्टेप को चढ़ना है और उतरना है, चढ़ना है उतरना है। इफ यू डू इट फॉर 150 स्टेप्स, डोंट डू इट फ्रॉम फर्स्ट डे, लेकिन स्लोली आप अगर 150 स्टेप पर ले जाते हैं, प्लस आप नाइट्रिक ऑक्साइड डंप करते हैं, तो आपका तुरंत शुगर लेवल जो है, विच यू हैव टू डू इट आफ्टर एनी ब्रेकफास्ट और एनी बोथ मील्स, आप अगर 1 आवर 45 मिनट्स के बाद करेंगे, जिस वक्त आपकी शुगर लेवल पिक पे होती है, उस वक्त आप करेंगे, तो आपका कम से कम शुगर लेवल जो है, पीपी शुगर लेवल आपका कम से कम जो है 20 से 60 पॉइंट डाउन आ सकता है, विच डिफर्स विद इंडिविजुअल। आप ये करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि यू ट्राई टू लर्न योर ओन बॉडी। एवरीवन्स मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट, और सभी को अपनी खुद की बॉडी पहचानना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप अपना खुद का डाइट, अपने खुद का एक्सरसाइज और डॉक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, प्लस अपने जो सप्लीमेंट्स है, उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन खुद के लिए अगर आप तैयार करेंगे, तो आपका डायबिटीज जो है विद इन नो टाइम जीरो हो सकता है। मतलब आप अगर इंसुलिन भी अगर आप ले रहे हैं, तो इंसुलिन इधर आपका छूट जाएगा, या कम से कम इंसुलिन के डोजेजेस कम हो जाएंगे इसके अंदर। एंड आई एम द सेल्फ प्रूफ। आज मैं टी शर्ट में जानबूझ के बैठा हूँ, यू कैन सी मी, आई वॉज 93। डॉक्टर शंकर सर कैन present my old photograph. You can see me how I am fit. I was wearing 44 short size, which is now today 40. डबल एक्सएल में टी शर्ट पहनता था, आज मैं जो पहन रहा हूँ विच इज ओनली एल वाला पहनता हूँ। माई वेस्ट लाइन वॉज 113 सेंटीमीटर विच हैज गॉन टू 95 सेंटीमीटर। एंड आई विल रिकमेंड कि सभी लोग वेट को ध्यान कीजिए। जो OMR जो मशीन है, जो अपने लाइफ न्यू 360 में वगैरह जो रिकमेंड किया जाता है, इसमें आप फैट पे ध्यान दीजिए। आपका वेट जो है, आपका BMI जो है, इट शुड बी लेस देन 25, लेस 2 kg। आप 25 से 2 kg कम कीजिए, एंड देन उसके बाद में आप जो है अपना 2 kg मसल गेन कीजिए, एंड देन यू विल सी कि आपका ऑटोमेटिक आपका जो है फिजिकल लेवल विल इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। एंड आई विल रिकमेंड दैट डाइट को आप जैसे डॉक्टर सर ने बताया कि आप अगर
कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करोगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। और आप अगर अब एक्सरसाइज और दूसरी चीजों को आप अगर कवर करोगे, इसी शंकर सर ने रेफर किया, दिस वाज 93 व्हेन आई वाज 93। आज सी my waistline was 113 centimeter. This is today. And I can say, if I can do it, मेरे से मैं मोस्ट आलसी बंदा हूँ, मेरे से आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि इस ग्रुप में बैठा हुआ हर एक बंदा इसको आसानी से कर सकता है। Excellent, excellent. Congratulations. थैंक यू सर। Thank you, Shankar. Thank you, Arun bhai. Any questions? 5-10 minutes. बस. आई थिंक इसमें मैं एक ही चीज है, ऑफ कोर्स पीसमील क्वेश्चंस ले सकते हैं, बट आज वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव द विजडम टू हेल्प यू on a case by case basis, and you can do it through personal consultation with Dr. Ram. He has his clinic running in Mumbai. Every day evening you can visit there personally for consultation uh, uh, through your upline, and then take it forward from there. Long distance jo log hai, we can also arrange for consultation there, and that will be actually truly beneficial, because एक घंटे का प्रेजेंटेशन के आधार पर यू कांट सेट आउट टू रेमेडी योर डायबिटीज योरसेल्फ। वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड एंड इट इज पर्सनलाइज्ड, सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली एनकरेज यू टू गो थ्रू प्रॉपर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम दिस टीम। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो सिर्फ दवाई देंगे आपको, एंड that is the problem Rakesh was facing some months back when he spoke to me. And then I told him that why don't you speak to Dr. Ram? He has benefited tremendously. And ज़्यादातर तक जब ऐसे recommendation देते हैं, people don't take you seriously. But Rakesh listened, and he has been the biggest beneficiary. And his family can now, now he's figured it out. He can only go one way now. He'll never become diabetic again, ever. Because he's been there already. So very, very good, Dr. Ram. Super presentation. Thank you very much. डॉक्टर अनुभव भाई का कुछ सवाल है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। Thank you. कोई डायबिटिक डॉक्टर इतना डिटेल में नहीं समझा था, इतना टाइम नहीं देता है। आई विश, बहुत अच्छा था, टू गुड। एक छोटा सा सवाल, ज्यादातर लोग जो डायबिटिक नहीं है वो कौन से सप्लीमेंट ले? मुझे डायबिटिक पेशेंट नहीं बनना है। हाँ, तो मैं कौन सा बेसिक इनफ, पीडीओ बोथ ऑफ इट, पीडीओ इज इनफ। और अगर डायबिटिक है तो पीडीओ विद मधुनाशिनी एंड एवीएच एंड प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। ओके, हाँ शंभू भाई। शंभू भाई। शंभू भाई। Yes, yes. Thank you, Dr. Ram and everyone. वीडियो चालू करेंगे आप? मेरा वीडियो चालू नहीं हो रहा है, मैं कोई बात नहीं, आप ऐसे बात करिए। अच्छा, डॉक्टर राम, थैंक यू फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली जो यूनिट्स है ना, आपने बताया कि 4 to 20 यूनिट्स एक बार खाने से, क्या वो थोड़ा रिपीट करेंगे थोड़ा? अब ब्लड लेवल करेंगे ना, फास्टिंग इंसुलिन उसका नॉर्मली 700 रुपया लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर रीडिंग आएगा। तो जैसा चोकसी ने बताया था, some people it will come as 20, some people will come 40, 60, 80, whatever it is. So the higher the reading, more resistance. So definitely आपका even HbA1c समझो 6.5 or something रहेगा, but if your fasting insulin is high, definitely it means that you have to be careful. So you have to try to bring it less than 10. Nowadays internationally they recommend between 4 to 6. इतना स्ट्रिक्ट हो गया, you have to bring your, but normal doctors don't do fasting, they only do HbA1c and hemoglobin and one fasting glucose, but at least once in a year you do your fasting insulin. That will give you a good idea. तो उसका नाम फास्टिंग इंसुलिन ही है ना? लेकिन यस, इसका नाम फास्टिंग इंसुलिन है। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट का नाम, ब्लड टेस्ट फॉर फास्टिंग इंसुलिन, बस मिनिमम 12 आवर फास्टिंग रिक्वायर्ड। या थैंक यू। Shankar, we can wind up 10:50. Yes, and सर मैं बोलूं? yes, doctor, go ahead. बहुत बढ़िया रहा सेशन डॉक्टर राम, हम Thank आपके you. आपके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड स्पेशली मिस्टर चौकसी जिन्होंने अपना शुगर 250-300 से ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे ले आया है, बीएमआई को काफी उन्होंने घटा दिया है, वेट लॉस किया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कमर 130 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर पे लेके आए। और ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके पास दोस्तों। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, हम लोग भी ये मेंटेन करते हैं काफी लोगों का। एंड आई टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि ये सब आपको किसी अच्छे जानकार व्यक्ति की निगरानी में करना है, आप अपने मन से नहीं करना है, क्योंकि अपने मन से आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करेंगे। टेक द हेल्प ऑफ समबडी हु इज वेरी एक्सपर्ट। एंड जिन जो लोग इस कॉल में हैं या जिनके किसी मित्र को ऐसा है या जिनके घर के कोई लोग रिलेटिव कुछ भी हैं, आप अपने अपलाइन के थ्रू कॉल करिए। यू कैन गेट द टाइम ऑफ डॉक्टर राम एंड एवरीथिंग, एंड वी कैन हेल्प यू लॉट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ऑल द एक्सेलेंट सेशन। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू शंकर सर, थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, Arun. Thank you, Girish. Thank you, वंडरफुल Shankar. सेशन, थैंक यू Thank you, वेरी Ashok मच। Jain. Thank you. शंकर जी, इसके That बाद का is- सेशन का लॉगिन आईडी क्या है? सेम? Yeah, 10:30. No, it's अलग login है. I've sent it separately. अलग login है. ओके सर। थैंक यू डॉक्टर राम, थैंक यू शंकर भाई। Thank you, Dr. Ram sir. Good night, guys. Let's leaders from Mumbai, Founders Platinum and up join at 10:30. Link is available with your upline.